Hello everyone, my name is Kirti and I am an assistant professor in ITM. Today I am here to talk about the subject that is banking and insurance, and I am going to cover the following topic, that is what is bank, origin of banking and history of banking. What is bank? There are various views about the origin of the word bank. One view is that it is derived from an Italian word bank, which means a bench. The other point of view is that it has originated from the German word bank, which means a joint stock firm. So the word bank has been originated from the Italian word bank, which means a bench. Bench means where a lot of people who are sitting together and conduct the business. And it has originated from the German word bank, which means a joint stock firm. So bank is working like a joint stock firm whose main business is to accept the deposit and lending over it, right? So the main business of the bank to accept deposits and lending money, right? So we can say that the public has been divided into two parts. From one part they are just to accept the taking money and making deposit over it, and to the other part just they are lending to it, right? So it is carried out by various financial intermediaries which performs the functions of safeguarding deposits and providing loans to the public. तो एक पार्ट से बैंक ने डिपॉजिट्स लिए और दूसरे पार्ट को वही डिपॉजिट्स एज अ लोन प्रोवाइड किए गए. तो जिनको लोन प्रोवाइड किया गया उनसे बैंक इंटरेस्ट चार्ज करेगी, राइट? और जिनका डिपॉजिट बैंक ने सबमिट किया है, जिनका डिपॉजिट जमा किया है बैंक ने, उनको इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगी. तो वट एवर द डिफ्रेंसिएशन बिटवीन दीज टू इंटरेस्ट, दे आर प्रॉफिट अवेलेबल टू द बैंक्स. ऑब्वियसली जिनको लोन दे रही है बैंक उनसे ज़्यादा इंटरेस्ट लेगी एज़ कम्पेयर टू द जिनसे डिपॉजिट ले रही है बैंक. तो जो भी डिफ्रेंसिएशन होगा वो बैंक का प्रॉफिट होगा. बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट of India 1949 defines banking as accepting for the purpose of lending or of investment of deposits of money from the public, repayable on demand or otherwise, or withdrawal by check, draft order or otherwise. The Reserve Bank of India Act 1934 and the Banking Regulation Act 1949 govern the banking operations in India. So there is two main bodies, that is RBI and Banking Regulation Act, that governs the business of banking, right? So the Banking Regulation Act says that the main business of the bank just to accepting deposit for the purpose of lending and investment of deposit, and it will be repayable on demand. आप डिपॉजिट कर रहे हो बैंक में तो आप जब चाहो अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हो, राइट? वट एवर द मीन्स प्रोवाइडेड बाय द बैंक. या तो आप सिंपल फॉर्म भर के दो, विड्रॉल फॉर्म, या फिर बाय चेक, बाय ड्राफ्ट, राइट? Banking company, any company which transact the business of banking. Banking system is a principal mechanism through which the money supply of the country is created and controlled. Money supply means total amount of money in circulation or total value of money available in an economy at a point of time. तो कहीं आपका इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ ना जाए, इसके लिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट और आरबीआई ने क्या कंडक्ट किया कि बैंकिंग सिस्टम को कंडक्ट किया कि इट इज़ एन प्रिंसिपल मैकेनिज्म हु जस्ट क्रिएट एंड कंट्रोल द मनी सप्लाई ताकि इन्फ्लेशन ना बढ़े, राइट? बैंकिंग सिस्टम अनेबल अस टू अंडरस्टैंड द कमर्शियल बैंक्स, सेकेंडरी बैंक्स, सेंट्रल बैंक, मर्चेंट बैंक्स और एक्सेप्टिंग हाउसेज एंड डिस्काउंट हाउसेज. तो बैंकिंग सिस्टम जो है वो किस किस को इंक्लूड्स करता है? कमर्शियल बैंक्स को. कमर्शियल बैंक्स मीन्स अ बैंक दैट प्रोवाइडेड सर्विसेज टू द जनरल पब्लिक और टू द कंपनीज जस्ट एज accepting deposits, making business loans and offering basic investment products. Secondary banks, a bank that provide financing to the other banks rather than to businesses or individuals. Central bank, that is RBI, it is an institution that manages the currency, money supply and interest rates. Merchant banks, merchant bank, it is like a company that conduct underwriting, loan services, financial advising, fundraising services for large corporations and high net worth individuals. Now accepting houses, it is an specialized in the acceptance and guarantee of the bill of exchange. You know, bill of exchange, it's a negotiable instrument, thereby facilitating the lending of money. A service fee is charged for guarantee payment, obviously. Discount houses buys and discounts the bill of exchange. So we will discuss
later on in a wider term. Now move to origin of banking. Now modern commercial bank in its present form is the recent origin, क्योंकि अब हम जिनकी बात करते हैं दैट इज़ द कमर्शियल बैंक, जिनमें आप अपने मनी को डिपॉजिट करते हो, जिनसे आप लोन लेते हो और अदर सर्विसेज इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स लेते हो. तो प्रेजेंट फॉर्म में जो मॉडर्न टर्म है दैट इज़ कमर्शियल बैंकिंग. इट्स एवोल्यूशन कैन बी ट्रेस्ड इन द फंक्शन ऑफ मर्चेंट्स, मनी लैंडर्स एंड गोल्ड स्मिथ्स. तो प्रीवियसली जब इसका ओरिजिन हुआ था तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था. वन इज मर्चेंट, सेकेंड इज मनी लैंडर्स एंड थर्ड वन इज गोल्ड स्मिथ. Merchants were traders in commodities. The trading activities were carried out on by them from one place to another. It was risky for traders to carry metallic money with themselves for payment. The traders with a high reputation began to issue receipts which accepted as title of money. These receipts or letter of transfer also called hundi. The merchant banking thus form the earliest stage in the evolution of modern banking. तो स्टूडेंट्स मर्चेंट्स क्या होते हैं, जो ट्रेडर्स होते थे कमोडिटीज़ में, तो बहुत रिस्की होता था उनके लिए कि एक प्लेस से दूसरी प्लेस ले जाना. मेटालिक मनी आप समझते हैं, मेटालिक मनी मीन्स जो दिनार बिना या गोल्ड की फॉर्म में, राइट, गोल्ड की फॉर्म में, सिल्वर की फॉर्म में, जो प्रीवियसली जब होते थे तो मेटालिक फॉर्म में ही हमारी मनी का सर्कुलेशन होता था, राइट. तो मर्चेंट्स जो होते थे, मर्चेंट्स का जो बिजनेस, मेन बिजनेस था जस्ट टू ट्रांसफर द कमोडिटीज, बट इट इज़ क्वाइट रिस्की टू कैरी मेटेलिक मनी विद देमसेल्व्स फॉर पेमेंट, राइट. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने रिसिप्ट इशू करना स्टार्ट कर दिए विच वर्किंग लाइक एन टाइटल ऑफ मनी, राइट. उन्होंने रिसिप्ट इशू करना स्टार्ट कर दिया. तो इट्स द ओरिजिन ऑफ द बैंकिंग. यहाँ से एक बैंकिंग का ओरिजिन हुआ कि जहाँ आपको मनी अपने साथ कैरी आउट नहीं करनी, क्योंकि इट्स क्वाइट रिस्की कि आप मनी लेकर जा रहे हो, बीच में कुछ रॉबरी हो जाए, कुछ हो जाए. तो यहाँ से बैंकिंग की ओरिजिनेशन हुई, राइट. नेक्स्ट इज गोल्ड स्मिथ. गोल्ड स्मिथ ऑब्वियसली डीलिंग इन द प्रीशियस मेटल, ठीक है. तो इन द पास्ट पीपल पोजेसिंग प्रीशियस मेटल्स यूज टू कीप विद द गोल्ड स्मिथ फॉर सेफ्टी. दिस रेप्यूटेड क्लास ऑफ गोल्ड स्मिथ यूज टू इशू रिसिप्ट्स फॉर ऑल हैड्स बीन डिपॉजिटेड विद दैम. तो गोल्ड स्मिथ क्या करते थे, अपने पास डिपॉजिट रखते थे. ऑब्वियसली दे आर चार्जिंग द कमीशन और दे आर चार्जिंग द फी, राइट, कि अब आपकी गोल्ड की वो सुरक्षा कर रहे हैं. तो यहाँ से भी ऑब्वियसली ये बैंकिंग का बिजनेस है, तो यहाँ भी बैंकिंग का बिजनेस ओरिजिनेट हुआ. देन मूव टू मनी लैंडर्स. मनी लैंडर्स आपको पता है उस प्राइमरी बिजनेस टू मनी लैंडिंग, राइट. दे आर यूज टू गिव द मनी टू द पब्लिक ऑन इंटरेस्ट जनरली फ्रॉम देयर ओन रिसोर्सेज. सो दे आर चार्जिंग हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट. अभी भी मनी लैंडर्स का काम बहुत चल रहा है, ठीक है, क्योंकि मनी लैंडर्स क्या होता है, इवन कई लोग क्या होता है, उन्हें बैंक से लोन मिलने में बहुत प्रॉब्लम्स आती है, तो वो मनी लैंडर्स के पास ही जाते हैं, बट दे आर चार्जिंग हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, राइट. क्योंकि वो एक तो ईजी वे में लोन प्रोवाइड कर देते हैं, पेपर फॉर्मेलिटीज़ कम होती है. तो मनी लैंडर्स का काम अभी भी चल रहा है. प्रीवियसली तो बहुत ज़्यादा था, बैंकिंग बहुत कम थी, बट यहाँ से भी बैंकिंग ओरिजिनेट हुई. The failure on the part of the money lenders, goldsmith to return money caused widespread distress among the people. In order to create confidence among the people, steps were taken to regulate the Banking Regulation Act, Banking Organization. तो ये जो तीनों थे, तो पब्लिक को प्रॉब्लम क्या होती थी, जैसे दे आर चार्जिंग हाई फी, दे आर चार्जिंग हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, फिर भी सिक्योरिटी का कुछ प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं था. तो इसलिए बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन की रेगुलेशन हुई, right. A conference was held in Nuremberg in 1548. It was decided that a bank should be set up by the state which should regulate the banking organization and techniques. The first central bank was formed in Geneva in 1578. Bank of England was established in 1694. The modern commercial banking system actually developed in 19th century, right. तो जो मॉडर्न कमर्शियल बैंक का जो डेवलपमेंट हुई, इट इज़ डेवलपमेंट मेड इन 19th सेंचुरी. अदरवाइज जो फर्स्ट सेंट्रल बैंक जो जिनेवा में हुआ था 1578 में, राइट. सो विद द पैसेज ऑफ टाइम द स्कोप ऑफ द कमर्शियल बैंक ऑब्वियसली इंक्रीज. दे आर नाउ डील विद द लार्ज नंबर ऑफ मैटर जस्ट टू ऑब्टेनिंग फंड्स, एडवांसिंग लोन्स टू द इंडिविजुअल बिजनेस फार्मर्स, राइट, making investment in stock, discounting bill of exchange. The commercial banks are now multi-services organization and play a vital important role in the financial markets and economy development of a country. Now move to history.
Banking in India in the modern sense originated in the last decade of 18th century. Among the first banks were Bank of Hindustan, which was established in 1770, General Bank of India established 1786. The largest bank and the oldest still in existence is the State of Bank of India. State Bank of India obviously सबसे बड़ा बैंक है और oldest बैंक भी है. It is originated as the Bank of Calcutta in June 1806 and 1809 it was renamed as Bank of Bengal. This was one of the three banks funded by the presidency government, and the other two were the Bank of Bombay and Bank of Madras. The three banks were merged in 1921 to form the Imperial Bank of India, which upon India's independence became the State Bank of India in 1955. तो इंडिपेंडेंस से पहले इसका क्या नाम था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, विच इज़ द मर्जर ऑफ थ्री मेन बैंक्स, जो यहाँ पे लिखा हुआ है. आफ्टर इंडिपेंडेंस it will become the state, it had become the State Bank of India 1955, right? Now the Reserve Bank of India was established in 1935 under the Reserve Bank of India Act 1934. In 1960 the State Bank of India was given control of 8 स्टेट एसोसिएटेड बैंक. ये आपको पता ही है, बट अब जो है ये तो हिस्ट्री है, बट अब तो आपको पता है कि बैंक मर्ज हो चुके हैं, तो अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है जो भी एसोसिएटेड बैंक है, जो भी इसकी सब्सिडरीज हैं, राइट. 1969 द इंडियन गवर्नमेंट नेशनलाइज 14 मेजर प्राइवेट बैंक्स. इन 1980 6 more private banks were nationalized. These nationalized banks were the majority of the lenders in the Indian economy. The Indian banking sector is broadly classified into scheduled banks and non-scheduled banks. The Indian banking sector is broadly classified into scheduled and non-scheduled banks. Scheduled banks are those included in the under Schedule 2nd of the RBI in 1934. RBI Act 1934 के Schedule 2nd में जो बैंक है, that is called scheduled bank. Now scheduled bank are further classified into nationalized bank, SBI, associate, regional rural banks, foreign banks, other private sector banks. These all are scheduled banks. The term commercial banks refers to both scheduled and non-scheduled commercial banks which are regulated under Banking Regulation Act 1949. Right. Now move to history. Liberalization in 1999. आपने पढ़ा होगा कि जो बैंकिंग की लिबरलाइजेशन हुई थी वो कब हुई थी? 1999 में. In the early 1990, then the government embarked on a policy of liberalization, licensing a small number of private banks. ठीक है, जो लिबरलाइजेशन जब हुआ था तो प्राइवेट जो भी बैंक्स थे उनको बहुत लिबरलाइजेशन में इनको लाइसेंस प्रोवाइड किए गए. दे केम टू द न्यू जनरेशन टेक सेवी बैंक्स इंक्लूडेड ग्लोबल ट्रस्ट बैंक विच लेटर अमलगमेटेड विद द ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूटीआई बैंक, जिनका अभी नाम चल रहा है एक्सिस बैंक, राइट, ICICI बैंक एंड HDFC बैंक. द न्यू पॉलिसी shook the banking sector in India completely. Bankers till this time were used to the 464 method. 464 method की उस टाइम तक जो मेथड चल रहा था, दैट इज बोरो जो करना है आपको 4% पे करना है, लैंड जो आपको करना है 6% पे करना है, राइट. बोरो जो करना है मीन जैसे मैंने आपको बताया कि जिनको आप लोन दे रहे हो उनसे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बैंक चार्ज करती है, तो दे आर जस्ट लेंड एट 6% एंड they are borrow at 4%. Borrow means they are just accepting deposit from the public, that means borrowing, right. Go home at 4, तो आप मतलब बैंकिंग सिस्टम 4 बजे ऑफ हो जाएगा और 4 बजे आप घर चले जाओगे. इट मीन्स कि आप इतना प्रॉफिट अर्न कर लोगे और 4 बजे तक आप घर चले जाओगे फंक्शन. सो दीज आर द बैंकिंग थ्योरी एंड हिस्ट्री. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच.